Hello, guys. Welcome to another day in Rishikesh. I do love Rishikesh, and after this video, I hope you guys love it too. First spot in my wish list was none other than rafting. We got a rafting company through our manager at the homestay Southern Nivas. We booked our slot at 8 am from Shivpuri. It was 16-kilometer ride which almost took 3 hours. Here is the chart according to kilometers and price rate you can hire. By the way, don't forget to ask for discount. During off seasons, they offer low rates as well. They picked us from our hotel and dropped at our start point. Safety with jackets and helmets, and all the instructions were given prior to rafting. What an adventure it was! Truly amazing. You have to try it when you are in Rishikesh. Next was Beatles Ashram. The ashram gained international fame when Beatles visited to study meditation by Maharishi Mahesh Yogi. ये जगह डेफिनेटली फोटोग्राफिक लोगों को बहुत पसंद आएगी. हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फोटोज ली. आश्रम काफ़ी बड़ा था इसलिए बहुत सारा टाइम लग गया देखने के लिए. वहाँ से निकले और यहाँ पे आके गिरे. समोसे के यहाँ पे. खाने के बाद हम ऋषिकेश की और एक सबसे बड़ी गंगा आरती देखने गए. ये जगह परमार्थ निकेतन है. परमार्थ निकेतन is situated in the lap of lush Himalayas along the bank of Ganga river. Pujya Swami Chidananda Saraswati Ji Maharaj is the spiritual head. It is the largest ashram in Rishikesh. Parmarth Niketan provides clean and pure atmosphere and a beautiful आरती and कीर्तन at the sunset. पूरा दिन थके हुए थे तो सोचा गंगा में एक एक डुबकी तो लगानी चाहिए. 1 घंटा पानी में आनंद लेने के बाद हम आरती देखने आ गए. आप अगर कभी ऋषिकेश नहीं आए हो तो आपको ये नया अनुभव ये वीडियो के जरिए दिखाया है. भजन का एक अलग ही माहौल था यहाँ पे. नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि. ॐ भगवते गणाधिपतये नमः. हर हर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानि सहितं नमामि भवानि सहितं नमामि ॐ जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता भगवान चित्तन फल पाता जय गंगे माता जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे यहाँ से निकली तो आगे भाग्य बिहारी का मंदिर दिखा, वहाँ भी दर्शन लिया हमने। यहाँ जाने का बहुत मन था मेरा, but we had another plans. We wanted to try LB, the award-winning sitting elephant restaurant. OMG, the ambience, food, decor, vibe, everything was just amazing. The view of Ganga from restaurant was simply beautiful. We here tried red sauce pasta, white sauce pasta, garlic bread and pizza. I hope through this video you lived one day in Rishikesh. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. Till then, thank you and bye.